Next May, we have roll number MCS 20048. Topic is investor and sustainability disclosure. So any paper, इसका inclusion criteria जो है वो हम देख लेते हैं. Inclusion criteria tells us investors sustain and its tells us about कि सस्टेनेबिलिटी तो उसी तरह जिस तरह से हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सी एस आर एनवायरमेंटल रिलेटेड पोर्शन कार्बन एमिशन डिस्क्लोजर या इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर. और जो इन्वेस्टर है वो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इन्वेस्टर परफॉर्मेंस, फर्म वैल्यू, स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, पोर्टफोलियो रेलिवेंट, इन्वेस्टर रिएक्शन, इन्वेस्टर जजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका सस्टेनेबिलिटी से जो लिंक है उसे हम देखना चाह रहे हैं इस पेपर के अंदर. सो जी फर्स्ट पेपर जो आपने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया उसको देखते हैं. स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, सस्टेन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज इवॉल्विंग, डू इन्वेस्टर प्ले ए मेन रोल. अच्छा, इधर अब हमने देखना है कि इन्वेस्टर्स और क्या इसमें सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर की बात हो रही है. एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्ट्रेटजी इज चेंजिंग एज इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन दिस इवॉल्विंग सिनेरियो. We explored the effect of pressure that a specific group of stakeholders, investors, exerts on quality of sustainability. Okay, good, very good. Paper is relevant. Second paper, do investor analysts value strategic corporate social responsibility disclosure? Okay, good. Do you manage what you measure? Investor views on the question of climate actions with empirical results from Swiss pension fund. Okay, you can I think just I have to see little details. Despite the political mandate of Article of the Paris Agreement 21 conference aligned, the task force climate related financial disclosure status report highlighted this asymmetry. The following paper is to evaluate the efficacy of information in informing investors about the alignment of their portfolios with Paris Agreement. Okay, you can include this paper. Corporate social responsibility, intensity, management, earnings, forecast accuracy, and investors' trust. Evidence from Japan. Okay. Does CSR reporting matter to foreign institutional investors? Matter to foreign investors in China. ओके, ठीक हो गया. मैनेजिंग सप्लायर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स विद वॉलंटरी वर्सेस मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स टू इन्वेस्टर. ओके. डू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स derive corporate transparency regarding business contribution to sustainable development goals? um, Corporate transparency regarding business contribution to the sustainable development goals. Okay, you can include this paper. The influence of firms emission management strategy disclosures on investors of valuation judgments. Okay. Climate finance and disclosure for institutional investor, why transparency is not enough. Climate finance and disclosure. ओके, फॉर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर. ठीक है, रेलिवेंट पेपर है. इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स टू सोशल कन्फ्लिक्ट बिटवीन CSR एंड कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस. Investors response to social conflict between. Okay, you can include this paper. Institutional investors attention to environmental information. In investors attention to environmental information trading strategy and market impacts. Evidence from China. Yes, you can include what, who can realize the spot value of corporate social responsibility. Evidence from Chinese investors profiles. Okay, this can be included. Effect of integrating CSR information in financial reports on investors firm value estimates. uh, Integrating CSR information to financial reports on investors firm value estimates. Okay, this can be included. Environmental initiative and disclosure by large companies. The views of investors, the environmental initiative and disclosures by large companies, the views of investors. Okay, thus benefit corporate status matter to investors, and exploratory study of investors' perception and decisions. Does benefit corporate status matter to investor? An exploratory study of investor perception and decision. I have to see this paper. Attain, they expect BCs to attain higher future corporate socialism than CCs even when they both have equal CSR rating. Okay, this can be included. Towards corporate transparency, the link between inclusion in a socially responsible investment and investor relations practices.
inclusion in a socially responsible investment index. Okay, this can be included. And then उसके बाद आ गया, will the European Union Commission successfully integrate sustainability risk and factors in investors protection regime, a research agenda? Will the European Union Commission successfully integrate sustainability risk and factors, uh, sustainability risk and factor in the investor protection regime? Okay, learn and lean and sustainable construction. Link between sustainability report disclosure and the impact of profitable opportunity for investors. Link between sustainability report disclosure and impact on profitable opportunities for investors. Okay, carbon social risk, corporate social risk and corporate disclosure, and investigation of investor analyst perception. Okay, again, okay, sustainability relevant है. Do environmental responsibility views influence investor use of environmental performance and assurance information? Okay, this is also relevant. So, um, it's good. You have done good job. Uh, आपने ये मामला जो है, but one thing, investor system of 135 was the query. Okay, I'm giving you 10 marks because I think आपने जो है वो अच्छी इसमें स्क्रूटनी की है. अच्छा, इसमें एक दफ़ा फिर इसको देख लें. अगर एडिशनल पेपर्स कुछ एडअप हो सकते हैं, कोई ये 88 है, कोई 12 13 100 प्लस अगर आप चले जाते हैं तो देन दैट वुड बी ए बेटर नंबर. ठीक है, उसके बाद आपको अब अगली स्टेज पे आप ऐसे कर सकते हो कि ये देखें, ये सॉर्ट ऑन का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें अगर आप साइटेड बाय हाईएस्ट करेंगे तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें हाईली साइटेड पेपर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके ऑर्डर में ये लिस्ट जो है वो हमारी बन जाएगी. ठीक हो गया. तो आप साइटेशंस जो हैं, अब उनमें भी पेपर्स देख सकते हैं. आपने ये 3-4 पहले पेपर जो हैं, ये 5 फर्स्ट पेपर जो हैं, इनकी साइटेशंस जो हैं उनको अगर आप देख लें तो देन आपको एडिशनल पेपर्स जो हैं वो मिल सकते हैं अपने टॉपिक से रेलिवेंट. तो वी हैव टू increase the list, we have to increase number of papers from the list. Okay, so वो हमने पहला जो इसके अंदर पेपर था, this one, the informational contribution of social and environmental disclosure for investors, उसकी ये हाईली साइटेड पेपर है. इसके 126 पेपर ओपन किए तो ये हमारे पास 126 पेपर्स आर अवेलेबल. ठीक है. अच्छा, तो अब ये 126 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, इस लिस्ट को एक नज़र अगर आप मार लें स्पीडीली तो देन आपको इसमें से भी कुछ पेपर्स मिल जाएंगे विच यू कैन चेक, एंड देन उसके बाद जो है वो सेव टू लिस्ट जो है वो कर देंगे, अपनी लिस्ट में सेव कर लें तो देन ये आपका मामला जो है वो बेहतर हो जाएगा.